Hello, my dear students. Today we are going to do chapter 3, Maths, class 3. The name of the chapter is Double Century. तो सेंचुरी का मतलब तो आपको पता ही होगा. सेंचुरी का मतलब होता है 100. डबल सेंचुरी यानी कि 200. Tens of thousands of years ago, people started counting. कई साल पहले की बात है. लोग तब से ही काउंटिंग करते थे. They wanted to keep records और चीज़ों को लिख कर रखते थे. So they make marks on the walls of caves and the barks of the trees. Trees पर निशान लगाना. Over time, they kept record of their things by making groups of 5, 10, 20, 60. ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर वो रिकॉर्ड रखते थे. Thousands of years ago, the ancient Indians created a method for writing any number. और उस समय कुछ सिंबल्स को यूज़ किया जाता था जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It was one of the most ingenious and creative inventions in human history. It made possible the invention of TV. और यही सब की वजह से टीवी की इन्वेंशन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स और बहुत सारी चीज़ों की इन्वेंशन हुई. A very important part of this invention was the introduction and use of the symbol zero. और ज़ीरो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसका मतलब मैथ्स में कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी ज़ीरो ने बहुत सारे काम को ईजी कर दिया. Over the next few months, we will learn how to write all numbers, however large, just using these 10 symbols. और इन्हीं 10 सिंबल से हम बड़े से बड़ा नंबर भी लिख सकते हैं. आइए एक अंदाज़ा लगाते हैं. कितने ऑरेंजेस है हमारे सामने? आई गेस 22. बैंगल्स आई गेस 50. लड्डूस 100. बर्फ़ी 50. बिंदी 50. बनाना 72. इट इज़ जस्ट एन एस्टिमेट. मैंने कोई काउंटिंग नहीं किया, मैंने सिर्फ एस्टिमेट लगाया है, अंदाज़ा लगाया है. लूडो, स्नेक एंड लैडर तो आपने खेला ही होगा. अब इसमें देखिए, विच नंबर विल रीच यू टू टेक द लेटर फ्रॉम 13 टू 50. 13 से कहाँ तक जाएंगे हम? 50 पे जाएंगे. इफ़ यू आर ऑन स्नेक एट नंबर 25, अगर 25 पे आपको स्नेक ने काट लिया तो आप कहाँ आएंगे? 2 पर. यू आर स्टैंडिंग ऑन 96, कितना नंबर आने से आप जो है वो स्नेक के मुंह में चले जाएंगे? देखिए इधर, 96 से 3 नंबर आने पर आप स्नेक के मुंह में चले जाएंगे. शो द नंबर राइटिंग ऑन द टेल ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नेक. लॉन्गेस्ट स्नेक हमारा 99 दिखाता है, तो हमने 10 का ग्रुप्स बनाया है. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड देन 9, दिस 99. Let us think. I am talking a pot. Tell me any number and I will let you the next. I said 42, pot said 43. I said 39, pot said 40. I said 63, pot said 64. I said 45, pot said 46. I said 89, pot said 90. I said 99, pot said 100. So what is 100? 100 का मतलब है century. 100 means century. Here ये 10 के ग्रुप्स हैं, ये सिंगल ग्रुप्स हैं, so it makes 99. Here this is 90 plus 10 is 100. 10 packets of bindi, all are 10 10, it is 100. 10 20 30 40, it is also 100. So these beads are also 10 in number. You can count it easily: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. Now making 100, you have to make 100 out of these bundles. These bundles are having 10 sticks in each. So here 70 plus 30, 100. 80 plus 20, 100. 50 plus 50 is also 100. Now the mouse is moving. Here it moves from 65 then to 35 steps and total is 100. Here again it is moving to 65 then 35, it is 100. Now 0 to 40, 40 to 60 steps. Now again it is 100. So we have to make 100 here. 60 40 makes 100. 75 25 makes 100. 20 80 makes 100. 45 55 makes 100. 15 85 makes 100. 60 and 40 makes 100. Now here you have to make few combinations that gives 100. 45 55 100. 30 70 100. 37 63 100. 19 80 100. 75 25 100. 60 40 100. Then here 91 plus 900. 93 plus 700. 90 plus 10 100. 92 plus 800. 95 plus 500 and 100 plus 0 is obviously 100. So let us explore a little more.
एक माचिस का डब्बा आपको लेना है, उसमें काउंट करना है उसकी मैस्टिक्स कितनी है, उसका एस्टिमेट लगाना है। देन 100 मैस्टिक्स कितने की बनेंगी? अगर एक बॉक्स में 50 है तो 100 दो बॉक्सेस से बन जाएंगी। यू कैन राइट हियर कि अगर हमने दो बॉक्स ले लिया तो 100 बन जाएंगी। 2, टेक अ हैंडफुल ऑफ सीड्स। सीड्स ले लिए हमने हाथ में। वी गेस इट इज़ हाउ मच? सपोज इट इज़ 20। काउंट द नंबर ऑफ सीड्स, उसको काउंट करेंगे। हाउ मेनी हैंडफुल ऑफ सीड्स विल टोटल मेक 100? कितने लेंगे? अगर 20 है तो हम लिखेंगे 20, 20, 20, 20 एंड 20 मीन्स 5 टाइम्स 20 यानी 5 बार आप लेंगे तो ये 100 बन जाएगा। नाउ मेकिंग द बंडल्स ऑफ 100 हियर। 101 makes 101. 102 makes 102. 103 makes 103. 104 makes 104. 105 makes 105. 106 makes 106. 107 makes 107. 108 makes 108. 109 makes 109. 110 makes 110. So here we have to write down the counting. You can practice the counting from 101 to 200. So let's count. Here this is 100, this is 10, 20 and 3. So 100, 1, tens, 2, ones, 3. 100, 1, tens, 3, ones, 3. 100, 1, tens, 3, ones, 5. 100, 1, tens, 3, ones, 1. So like this you will write on the place. 100 ones, tens 4, ones 2. 100 1, tens 0, ones 4. 100 1, tens 5, ones 0. 100 1, tens 2, ones 0. So it will give you a new number. 101, you have to match it. Here is 101, 116, 110 is here, 100 is here, 140 is here. 127, 128, 109, 1110, 134, 135, 105, 106, 149, 150, 100, 101. So here 10, 20, 30, 40, 50 likewise you will do. Now what it is said, you have to draw it. Clap, snap and pat. So once again 100, 5, 0, 150, 100, 5, 1, 150, 100, 5, 2. So here you will write 1, here you will write 5 and here you will write loose sticks 2. Here is 1, 5, 3, 1, 5 and 4, 1, 5 and 5, 1, 5 and 6, 1, 5 and 7, 1. So you'll write down here 153, 154. Here you will write 100 and 56, 157. We also speak like this. Now rest 2 you will do by yourself. Coming to the next one. Here you need to write up backward counting from 200. So you will write here 200, 199, 198, 197, 196 and so on. You will complete this backward counting. Fill small container like a small bowl of seeds such as kidney beans and chickpeas. ऐसे हम लेके इसको काउंट करेंगे, एस्टिमेट लगाएंगे
इट इज़ 100. हमने एस्टिमेट लगाया. इट इज़ नॉट काउंटिंग, जस्ट एस्टिमेट लगाना है. गेस हाउ मेनी टाइम्स यू नीड टू फिल द कंटेनर. 200 सीड्स. सो अगर 100 है तो हाउ मेनी टाइम्स यू विल टेक. 200. ओनली 2 टाइम्स. सो 0 to 150, then 50. It will make 200. Means 2 century. 0 to 140 and then 60. It makes 2 centuries. Once again, 2 centuries means 200. So let us do a jumping game here. 10. This is 100. 110. No, this is 105. 1 to 5 points are here. So you'll write 105. Then again 5 points. 115. Then again 5 points. 125. Then again 5 points. 135. Then again 5 points. 145. Likewise you will do here also. 100, 120, 130, because here are 10 points. 140, 10 and 10, 20. So here it would be 140. Here it should be 160. Here it should be 180. Now you have to fill the table here. To mark it also, 1 less, 1 more. 160. 1 less is 159. माइनस 1 कर देंगे. 1 मोर में 1 प्लस कर देंगे. 161. 128. 130. 186. 188. Rest 2 you will do. Now use mastic bundle to make 125. Make 145 using a gindi. बिंदी you can say. गिन लड़ी से भी बना सकते हैं आप. Make 170 on a number line. So you can show on the gaps of 10, 10, 10, 170. Now this is the pictorial representation of this 114, 100, 10 and 4 ones. So 100, how many hundreds? 100. How many tens? 4 tens. Sorry, 1 tens. And then how many loose? 4. Now here 132. So you have to draw bundles like this here. You will write here 1, 3, 2. You will write here 100 place 1, tens place 3 and ones place 2. Here you will write 1, 5 because 5 bundles and 4. So here you will write 1, 5, 4. Here you will write 154 more. Just like this you will write here. Bundles आप draw कर लेंगे. 172. This would be any number you can take here. Suppose it is 155. 30 more than 150, it is 182. 197. So for 197, 1, 9 and 7. Here you will write 97 more than 100. 155 you will write 1, 5, 5. You will write here 55 more than 100.
Like this, rest you will do. And do not forget to draw the bundles. Now mark the following numbers on the number line. 109, so it will come here. सबसे पहले आप यहाँ निशान लगा देंगे, छोटे छोटे निशान लगा देंगे. यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 109 will come here. 109 जो है यहाँ आएगा. सभी मार्क्स के बीच में बराबर का गैप होना चाहिए. 3, 4, 5. Like this, 109 will come here. Then 112 will come here. 120, 124 will come here. 134 will come here. 146, little more than 145, 146. Then you have to mark 155, 50, and then in the middle one it is 55. 60, 63 will come here. 70, 78 will come here. 89, closer to 90. 98, closer to 200. तो आप ऐसे निशान लगा देंगे. One you will do. Now, I hope the lesson is very clear to you. You will write down, learn it properly, practice it properly, and get good marks in school. Thank you.